Hello everyone. So finally we have covered our unit 3, that is major ecosystem. So today we are going to do important questions of the chapter. But before starting the videos, I want to request the viewers to please subscribe my channel. It just boosts up and motivate me. It gives a hope that yes, people like my video. But one more thing, if you don't like, you can tell me. I'll try to sort out all the problems, all the shortcomings of my videos. Right? So, okay, that's enough. Let's see our first question. That is, the word forest is derived from, and your option is French word, Latin word, Greek word, and Arabic word. So the right option is Latin word, right? And the next question is, what determine the distribution of trees? Option is climate, nature of soil, land topography, all of the above. Obviously, it is all of the above. Next question is, consider the wrong about the characteristics of coniferous forest. High rainfall, strong seasonal climates, evergreen plants, long summer and short winter. So we have to consider wrong statement. So D is the right answer. Our next question is, which forest has highly diversified flora? Temperate rainforest, tropical rainforest, both A and B, or neither A and B? And the right answer is tropical rainforest. Fifth one is, which of the following is known as Granary of the world? Grassland ecosystem, wetland, forest ecosystem, or impoundments? So the right is grassland ecosystem, right? So our next question is, consider the following about desert ecosystem. So read the sentence. Desert in temperate regions often lie in rain shadow area. Second one is, the Indian desert is one of the most heavily populated desert regions of the world. Third one is, the perennial plant species are scattered throughout the desert ecosystem. And the last one is all of the above. Obviously, it is all of the above. Every statement is correct. So our next question is, which animal drinks water periodically and is physiologically adapted to withstand tissue dehydration for long period? Lion, tiger, elephant, or camel? Obviously it is camel. We have learnt it in our desert ecosystem, right? Next question is, which biome experiences intense heat and strong wind with a great desiccating action during April to June? Tundra biome, desert biome, forest biome, or grassland biome? It is desert biome, right? Next question is, on which animal Calotes and Uromastyx are predatory in Thar desert? Option is desert locust, desert gerbil, desert dragonflies, or desert snakes? Obviously it is desert locust. We have seen it in desert ecosystem. Our next question is, which among the following is not brackish water? Mangrove swamps, estuaries, salt marshes, or shallow sea? Not brackish, right? So which one is correct? Obviously it is shallow sea, right? Sea comes under marine water, right? Marine water, okay? Our next question is, who among the following is swimmer? Neston, Banthus, Necton, or Periphyton? It is Necton, है ना? Our next question is, which organism live at the air-water interface? Plankton, Necton, Neston, or Banthus? It is Neston, okay? Our next question is, select the incorrect match. We have to select among them.
First one is lentic, standing, lotic, running, plankton, microscopic plants, benthos, fish. We have to select incorrect match. Okay, so the right answer is benthos, fish. Fish is necton, not benthos. And what are benthos? Benthos are crabs or the organism that was found in the bottom of the ocean. Okay, so our next question is lentic ecosystem does not include pond, lake, springs, wetlands. And the right answer is springs. It is not lentic, it is lotic. Okay, our next question is what is FUMDIS? Floating wetland, floating lake, floating island, or none of the above? And the right answer is floating island. We have read it in case study of Loktak Lake. Next question is saline ecosystem comprise all rivers, all wetlands, all oceans, all islands. Obviously it is all oceans because salinity is found in oceans. Okay, next question is select the incorrect statement. The estuaries are characterized by high salt content in their substratum. The estuaries do not support large organisms. The estuaries are the most productive ecosystem of the biosphere. Estuaries are a nursery ground for a large number of fishes. So the right answer is the estuaries do not support large organisms. I have taught you in a very good way. If you didn't watch the video yet, I suggest you to watch once. आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारे कॉन्सेप्ट की. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज plants or animals that cling to rooted water plants above the bottom mud are periphyton, plankton, necton or nuston. Which one? It is periphyton. Okay, our next question is tropical rainforest occurs near the equator, tropical region, temperate region or subtropical region. It is near the equator. Our next question is, this is the final one. Coniferous forest is also known as boreal forest, rainforest, mountainous forest or temperate forest. It is boreal forest. So हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक के आंसर अच्छे से आ रहे होंगे. अगर नहीं आ रहे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियोस को अच्छे से देखो, तो उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. अगर वीडियोस में कुछ छूट गया हो तो सारी चीज़ मैंने इस क्वेश्चन आंसर में कवर कर दिए हैं. सिर्फ इतना क्वेश्चन से ही पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा. आपको बस क्वेश्चन का पैटर्न देखना है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करना है कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, सो फर्दर वी सी द सब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन सेट किए हैं. ये सारे के आपको आंसर लिख के प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, बट यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट इन सब्जेक्टिव वे. तो आपको सब्जेक्ट की पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे अकॉर्डिंग. आई डोंट नो आप लोगों को होता है या नहीं, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता. तो जल्दी से 4 क्वेश्चन देख लेते हैं. पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन और डिफरेंशिएट बताना है बायोटा ऑफ पेलाजिक एंड बेंथिक जोन. आई होप आप बता दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम की क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने आपको बताया था कि ग्रासलैंड क्या है, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड. तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. आई होप आप लिख दोगे. नेक्स्ट है
राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इसके बारे में भी मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से लिखने वाले हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सम फीचर्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम। इसे भी आप बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने जितने भी आंसर बताए हैं, अगर आपको इसमें से किसी में भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसे एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी। ओके, तो इस तरीके से ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक 2 को पढ़ेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको मेरे कंटेंट में कोई भी कमी लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उसे सही करूँगी, है ना। और अच्छा लग रहा है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से सब्सक्राइब कर देना चाहिए और शेयर भी कर देना चाहिए। इससे मुझे पता तो चले कि कितने लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं या नहीं। सो थैंक यू so much friend, see you in the next class, till then thank you so much, have a good day।